जाओ जल्दी आ जाओ। ये लो कॉफी पियो। थैंक यू कॉफी कॉफी पियो। शॉट इज मस्ट। चीनी तो है ही नहीं। चीनी। चलो जी शुरू करें। हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। मैं रुचि, मैं दीपक। और आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द हॉटेस्ट डिमांड टॉपिक कि हमारे घर का हाउस प्राइस क्या है और मंथली एक्सपेंसेस. सो इट्स ऑल गोना बी अबाउट money. So guys, one thing I want to tell you about Deepak, he's our finance guy. He's really very good in getting us great credit card, bank related or mortgage deal. Thanks to him, actually we were able to save thousands of dollars. Of course, like it's a matter of finances and it's a bigger money that we're talking about. You need to do all the research and whatever money that you can save, just save it. Save it for your wife. Buy her something nice. Of course. So to give you a brief, हमने अपना पहला घर बिल्डर से लिया था ब्रांड न्यू 2017 में. It was a single detached home around 1700 square feet. So of course ये price appreciate हो चुका है considering the hot Canadian market, but we really wanted to put forward the all details with you guys कि हमारी journey of saving for down payment और हमने घर लिया वो कैसी रही. कनाडा में जब आप नया घर बुक करते हैं तो उसमें एक बेस प्राइस होता है एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट कि आपने कितने अपग्रेड्स कराए हैं उसमें उसका प्राइस ऐड हो जाता है. तो जैसे कि हमने कहा कि हमारा बेस प्राइस था 409,900. उसके ऊपर से हमने 20,000 के आसपास के अपग्रेड्स कराए जो कि काउंटर टॉप, डिफरेंट काउंटर टॉप, टाइलिंग, कैबिनेट्स, डिफरेंट थिंग्स. सो इन टोटल हमारा जो नेट प्राइस बना वो अराउंड 427 का बना. सो आफ्टर द हाउस प्राइस जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो है डाउन पेमेंट की. तो अराउंड हम लोगों ने 2 साल पहले घर लेने के इन 2015 हमने एक रैंडम मॉर्गेज अप्रूवल ले लिया था जस्ट टू सी कि हम लोग कितने पानी में हैं, और उसके बेस पे हमने 20% टारगेट बनाया कि इतनी डाउन पेमेंट हमने सेव करनी है. सो बेस्ड ऑन आवर नेट प्राइस जो हमारी डाउन पेमेंट बनती थी वो अराउंड $85,453 के आसपास बनती थी. अब नए घर का जो डाउन पेमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है रीसेल हाउसेस में. नए हाउसेस में यू हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द ऑफर. इन आवर केस इट वाज 5% and then rest of the 15% we gave at the time of closing. Guys, one more amazing thing, we literally saved $22,000 while choosing our mortgage optimally, and we're gonna share those tricks with you. Stay till the end of the video, हो सकता है आपके भी कुछ पैसे बच जाएं. So guys, in addition to down payment, हमने कुछ cash closing cost के लिए भी save किया था. कई लोग उसको hidden cost बोलते हैं, but it basically include, for example, lawyer fees, taxes, and other things related to the house. For affordability a lot. So in Canada, first time home buyers को land transfer tax में rebate मिलती है. In our case, हमारे एक region में हमें $4,000 की rebate मिली थी. उसके बेस पे जो हमारा प्राइस बना वो बना $532.54. And that rebate may vary from region to region. So इसके अलावा हमने पे करी थी lawyer fees that includes the legal fee and title and deed. That was cost around $2,000. इसके अलावा हमने पे किया था mortgage discharge fee. ये वो फी होती है जो कि आपको अपने लैंडर को पे करनी पड़ती है, which was around $400. We also paid around $300 for appraisal fees. Appraisal fees भी mortgage कंपनी आपसे चार्ज कर सकती है for appraising your house. In total हमने around $4,000 पे किया as a closing cost. So अगली वीडियो में हम कवर करेंगे how we found the perfect deal while selecting the mortgage और कौन से हमने right features choose करे जिसके कारण we actually saved a lot and make our process easy and put less effort. And to put less effort. And so make sure you subscribe to our channel and don't miss that video. So based on our net price और 20% of down payment जो हमारा principal amount बना जो कि हम borrow करेंगे from our lender is $341,000. हमने ये mortgage लिया at a fixed rate of 2.54% for a fixed term of 5 years. There is always an option to get a variable rate as well, but we went with a fixed rate because it was better at that time. Usually जब आप ये लोन लेते हैं you can pay it off in either 25 years or 30 years जिसको amortization period कहते हैं. In our case we went with 25 years. So after all this जो हमारी bi-weekly payment बनी that becomes $769. So some of the information you find in this video is very obvious and basic. But please keep in mind this home buying series is intended to help everyone including first time home buyers. In order to save money, instead of going for 30 years of amortization, we actually went with 25 years. That actually helped save around $22,000.
Secondly, instead of going for regular bi-weekly payments, we went with accelerated bi-weekly payments. That helped us save around $13,000. So the third thing was we negotiated the mortgage discharge fees and the appraisal fees that the lender was charging us. Most of the time, lender give you a hard time, but they will waive it off. So the fourth thing जो हमने करी, we started paying some extra money towards our mortgage payments. This is another feature that you want to look in your mortgage that allows you to put some extra money over the time. To all our lovely subscribers who have asked our home tour again and again, please be ensure that video is in making and we'll post that soon. So guys, ये सारे expenses थे before buying the house. Somebody rightly said कि house actually come with the expense, तो ये list तो खत्म होने वाली है नहीं. As soon as we moved in, we got the monthly expense list, which we really wanted to make sure कि हमारी affordability में हो. So the biggest portion of this expense is the mortgage payment, where we pay around $1,672 per month. This seems like a big number, but don't you worry, a part of it actually goes toward your equity. So second biggest number is for property tax, जिसमें हम pay करते हैं around $356 every month. And this tax may vary from city to city. थर्ड इज द यूटिलिटी, जिसके अंदर इंक्लूड होता है इलेक्ट्रिसिटी, गैस या वाटर का बिल. एंड एज अ फैमिली ऑफ 2 हम पे करते हैं रफली $89 पर मंथ. फोर्थ इज द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जिसके लिए हम पे करते हैं $50 पर मंथ. फिफ्थ पॉइंट इज द वाटर हीटर. इन कैनेडा मोस्ट ऑफ द हाउसेस रेंट दिस वाटर हीटर, जिसका बिल हम अराउंड पे करते हैं $35 पर मंथ. So in total हमारे monthly fixed expenses पड़ते हैं $2,202. So guys, इस वीडियो से हम आपको ये डराना नहीं चाहते. We don't want to demotivate you कि इतना पैसा चाहिए, ये कैसे होगा. It is very important कि घर लेने से पहले आपको पता हो कि आपको एक्चुअल में कैश कितना चाहिए और आपका मंथली एक्सपेंस कितना चेंज होने वाला है. Okay, I can do it now. 1, 2, 3, start. And the features that. Oh my god. Okay, 1, 2, 3, start. Your wife is funny. Okay.